Good morning, class 9th. So, students, today we will start the next plant tissue, that is the permanent tissue. Up till now, we have discussed about the meristematic tissue. Okay, that tissue, it is responsible for the increase in the length as well as it helps in the increasing the branching pattern, as well as it is also playing role in increasing the girth of the plant. Now next is the permanent tissue. Our next topic is permanent tissue. Permanent tissues, they are the another kind of the plant tissues. We have already discussed that plant tissues, they are divided into two categories mainly. The first one we have discussed in our last video, that was the meristematic tissue. So the next topic is permanent tissue. So we all know that the different parts of the plants, they have to perform different kind of functions. Okay, so cells which they are formed by the meristematic tissue, they lost their property to divide and they take up the specific roles. Okay, so the cells which have divided by the meristematic tissue, those cells, they get differentiated. In our last video, I have discussed with you that what is the meaning of differentiation, to get specific roles. Okay, तो जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से सेल डिवाइड हुए हैं, आफ्टर देयर डिवीजन उनकी जो प्रॉपर्टी है डिवाइड होने की, वो लॉस्ट हो जाती है एंड उनको एक स्पेसिफिक रोल मिल गया होता है. Okay, so such cells which have lost their property and now they are having some specific role, such kind of cells, they give rise to the permanent tissue. तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो अपनी डिवीजन लॉस्ट कर देंगे, अपनी डिवीजन की जो प्रॉपर्टी है उसको लॉस्ट कर देंगे और उनको एक पर्टिकुलर फंक्शन मिल जाएगा, एक स्पेसिफिक रोल मिल जाएगा. सो देन the meristematic tissue is transformed into the permanent tissues. Okay, so if in the simpler terms we have to define permanent tissues, they are those tissues in which the growth and division capacity has been lost. But ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरह से lost हो जाएगी ये property. कुछ tissues ऐसे भी हैं permanent जिनमें poor division capacity रहती है, बहुत स्लो डिवाइड करने की कैपेसिटी रहती है. ओके, सो आई होप नाउ यू ऑल विल गेट द मीनिंग ऑफ परमानेंट टिश्यूज. एंड सेकंड जो आपकी सबसे मेन क्वेरी थी कि मैम हाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दे आर कन्वर्टेड इनटू द परमानेंट टिश्यू. आई होप नाउ यू गेट द आंसर टू योर क्वेश्चन. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीचर्स ऑफ द परमानेंट टिश्यूज़. हमने लास्ट वीडियो में जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के रिलेटेड पॉइंट्स पढ़े थे, करेक्टर्स पढ़े थे, इसी तरह से परमानेंट टिश्यू के भी कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. सो वी विल डिस्कस दीज पॉइंट्स. फर्स्ट वन, द परमानेंट टिश्यू इट मे बी लिविंग और इट मे बी डेड. दोनों हो सकते हैं, लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं. ओके, These may be thin और thick. अब ये जो cells हैं, इनकी जो wall है, it can be thin और it can be thick walled. Okay, so ज़्यादातर जो living cells होते हैं उनमें thin walls होती हैं और जो dead cells होते हैं उनमें thick walls होती हैं. ये याद रखना है आपको. Okay, so I am again repeating the point. The cells of the permanent tissues, they can be thin और थिक वॉल्ड. क्लियर, थिन वॉल्ड मैंने यहाँ पर बनाया, थिक वॉल्ड मैंने यहाँ पर बनाया. तो ज़्यादातर जो थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं दे आर लिविंग एंड थिक वॉल्ड दे आर डेड. ओके, सेल्स दे हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज. इन परमानेंट टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं इनकी फिक्स्ड शेप और साइज होते हैं. ओके, द लिविंग सेल्स दे हैव नो और वेरी पुअर डिवीजन कैपेसिटी. इनकी जो डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है वो बहुत पुअर होती है या फिर
होगी ही नहीं, बिकॉज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वही परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट करेंगे जिनकी प्रॉपर्टी डिवाइड करने की लॉस्ट हो चुकी है या फिर बहुत कम हो चुकी है. ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ intercellular spaces, they are oftenly present in the permanent tissue. Okay, permanent tissue में intercellular space, it means दो cells के बीच का जो space है वो present होता है ज़्यादातर. Okay, I hope the meaning of intercellular space is clear. Inter means in between, in between cell space, यानी दो cells के बीच का जो space है that is present. Now we move on to the next topic, that how the meristematic tissues, they are different from the permanent tissues. So both of these, they are different from each other in various kind of features, but they both are equally important for the plant growth. They are equally important for the plant growth. Okay, now meristematic tissues, they are composed of small, spherical, polygonal and undifferentiated cells. Undifferentiated क्यों बोला हमने इनको? Because इनके पास सिर्फ एक ही रोल है, to divide. इसके अलावा इन cells का कोई और रोल नहीं है. But if we talk about the permanent tissue cells, they are larger as compared to the meristematic cells, as well as they are differentiated, because we have already discussed कि अब इनके पास एक specific role आ जाता है. जितने टाइप के परमानेंट टिश्यूज हैं उन सभी के पास स्पेसिफिक रोल्स आ जाते हैं. ओके, सो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग देम एज डिफरेंशिएटेड सेल्स दे आर हैविंग. ओके, नाउ in the meristematic tissues we know they have to divide rapidly, they have to divide continuously throughout the life, so they will have dense cytoplasm. And if we talk about the vacuole, vacuole is small, or we can say it is absent generally. But in case of permanent tissue they have less cytoplasm. Okay, आप सभी ने प्लांट सेल का जो डायग्राम पढ़ा है वो बेसिकली हमारा परमानेंट टिश्यू से आप रिलेट कर सकते हो. सो दैट परमानेंट टिश्यू सेल, इट इज हैविंग लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. ओके, दैट इज द लिविंग परमानेंट सेल की बात कर रहे हैं हम. लिविंग परमानेंट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म साइड्स में प्रेजेंट होता है, तो उसका अमाउंट साइटोप्लाज्म का एज कंपेयर टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज लेस. ओके, now if we talk about the intercellular spaces in meristematic tissues, I have discussed with you that cells, they are very tightly arranged. They are very tightly arranged. मैंने बताया था जैसे फ्लोर में टाइल्स लगी हुई होती हैं उसी तरीके से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में सेल अरेंज्ड हैं very tightly. So intercellular spaces, they are absent. But in case of permanent tissues, ज़्यादातर usually what happens, intercellular spaces, they are present. Okay, in meristematic tissues the cells, they have thin cell wall and their cell wall is elastic. Now what is the meaning of elastic? Elastic means it can change its shape. Okay, it can just get expand and then come to the normal position again. This is the meaning of elastic. तो ये cell wall क्या है meristematic tissue की? इलास्टिक होती है. बट इफ़ वी टॉक अबाउट द सेल वॉल ऑफ द परमानेंट टिश्यू, हमने अभी अभी पढ़ा था कि इट मे बी थिन और थिक. इन केस ऑफ लिविंग सेल्स द सेल वॉल इज थिन, इन केस ऑफ डेड सेल्स द सेल वॉल विल बी थिक. ओके, इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू न्यूक्लियस इज लार्ज एंड प्रोमिनेंट. प्रोमिनेंट मीन्स कि हमें ईजिली विजिबल होता है, अच्छे से दिखाई देता है. Why the nucleus is large in meristematic tissue? Because यहाँ पर rapidly division होगी. Rapid division को control करने के लिए जो unit है वो nucleus होगा. Okay, because we know that nucleus is the controlling unit of the cell. Okay, as the cell, it has to divide rapidly. This is the reason that the meristematic tissues, they have large
and prominent nucleus. But if we talk about the permanent tissue, nucleus is less conspicuous. Conspicuous मतलब बहुत छोटा है साइज में, अननोटिसेबल. कॉन्स्पिशियस, लेस कॉन्स्पिशियस मतलब अननोटिसेबल है, यानी हमें बिल्कुल क्लियरली अच्छे खासे तरीके से नहीं दिखाई देता न्यूक्लियस. ओके, एज कंपेयर टू दी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमें एकदम से लार्ज साइज न्यूक्लियस दिखाई देगा, बट यहाँ पर उसका साइज बहुत छोटा है, तो ईजिली ऑब्जर्व नहीं कर पाते हम न्यूक्लियस को, ईजिली देख नहीं पाते हम न्यूक्लियस को. Now meristematic tissue cells, they have property to divide, and permanent cells में they have not the property of division, or we can say that they have very less property of division. Okay, now meristematic tissues, they are generally the simple kind of tissues. They are not forming any complex part. But if we talk about the permanent tissues, they may be simple और कॉम्प्लेक्स. ओके, यहाँ पर आप अभी आगे डिटेल में पढ़ोगे कि जो हमारे परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो सिंपल भी हो सकते हैं स्ट्रक्चर में, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं स्ट्रक्चर में. नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, दे आर ऑलवेज लिविंग एंड दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव. जब हमने करेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, आई हैव डिस्कस्ड विद यू ओवर देयर दैट दीज सेल्स आर लिविंग बिकॉज ओनली लिविंग सेल्स दे कैन डिवाइड. We can't say that dead cells they can also divide. But in case of permanent tissues, the cell may be living or they may be dead. Now meristematic tissues, their main function, as I have discussed with you in the starting of this video, कि meristematic tissues generally plant की growth में help करते हैं. हमने 3 types of meristematic tissues पढ़े थे. Okay, what were the 3? Apical, intercalary and lateral. Apical helps in increasing in the length, intercalary helps in increasing the branching and lateral helps in increasing the girth. So आप यहाँ पर देख रहे हो कि तीनों growth करने में help कर रहे हैं plant की. But in case of permanent tissues, these permanent tissue cells, they will provide the protection if they are dead. They will provide the support as well as conduction. Conduction means they can easily transfer the material from one place to another place, and even they are used in the storage purpose. ये food को store भी करते हैं. अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये सारे के सारे functions easily समझ में आएंगे. Okay, now meristematic tissues, they are metabolically active. They are metabolically active. Okay, but in case of permanent tissue, metabolic rate is low as compared to the meristematic tissue. इनका metabolic rate high क्यों होता है? Because इनको rapidly, continuously throughout plant life divide करना होता है. But permanent tissues की energy demand इतनी ज़्यादा नहीं होती as compared to the meristematic tissues. So इनका जो metabolic rate है वो क्या है? Low है. अगर आपको मेटाबॉलिक वर्ड नहीं भी याद रहता तो आप एनर्जी डिमांड लिख सकते हो. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एनर्जी डिमांड हाई है एंड परमानेंट टिश्यू की एनर्जी डिमांड लो है. सो दीज वर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. सो यू हैव टू लर्न एट लीस्ट 6 पॉइंट्स ऑफ दीज टू. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 marks. Now we move on to the next part, that is the flow chart showing the division of the permanent tissue. Now my dear friends, this permanent tissue, they are the mature cells which are incapable of cell division generally. Okay, मैंने यहाँ पर दोबारा से बोल रही हूँ, either they have completely lost the property of division or they are having very less property of division. Clear? So वो जो tissues हैं वो permanent tissues कहलाते हैं and they are divided into 2 categories, simple and complex permanent tissues. Now these simple permanent tissues, they are made up of single type of cells. इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया? Simple tissues रखा गया. ये एक ही जैसे सेल से मिलकर बनते हैं. Only one kind of cell
they are formed of. Okay, but if we talk about the complex tissue, complex tissues, they are made up of more than one type of cell. Then only we are calling them as complex, because they are including different types of cells. Okay, different types of cells, they combine to form the complex permanent tissue. Now, my dear students, simple permanent tissues, they are of three types: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. On other hand, complex permanent tissue, they are of only two types, xylem and phloem. Okay, xylem, it is further made up of different types of cells, तभी हमने इसको complex बोला. So question comes that how can you say that xylem is a complex permanent tissue? So your answer will be that xylem, it is the complex tissue because it is made up of 4 different type of cells. So what are the components of xylem, or what are the different types of cells by which xylem tissue is made? That is xylem vessel, tracheids, xylem parenchyma and fibers. These are the 4 types of cells which combine to form a complex structure called as xylem. Now if we talk about the phloem, phloem is again the example of complex permanent tissue. So ये question यहाँ पर भी आ सकता है that how can you say that phloem is the complex tissue? Again, phloem is made up of 4 kind of cells. They are sieve tube, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. So as complex tissue, we have proved over here that they are formed of different kind of cells. So that is why they come under the category of complex permanent tissue. And these complex permanent tissues, they are helping in conduction. Conduction मैंने अभी आपको last page पे बताया. What is the meaning of conduction? To transport the material from one place to another place. Okay. So हम डिटेल में अभी इनके बारे में पढ़ेंगे. बट इन केस ऑफ parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, they are only made up of similar kind of cells, single type of cells. So these are basically providing the protection as well as support to the plant. So this was the flow chart which is representing the division of the permanent tissue.